Good morning class. Welcome to your computer class. Tomorrow is your unit test of computer, and first, what is the syllabus of your unit test? Your chapter number 1 and 2. Your first chapter is of computer virus and your second chapter is of number system. First we are going to discuss about second chapter, number system. First tell me, what is the meaning of number system? Why we are going to use number system? It is the way how we can write the numbers. इससे हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि हमने नंबर्स को कैसे राइट करना है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. व्हाट इज इन द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है बेटा, जब आप छोटे थे, देन इफ यू वांट टू राइट 2, then how can you write like this 1 2 and 5? अगर आप इसको प्लस करने चलते हो, 5 प्लस 2 आप कैसे राइट करते थे? 5 को कैसे लिखते थे? 1 2 3 4 5 5 6 7 मींस कोई पोजीशन नहीं होती. It is called your non-positional number system. But in computer we are going to discuss about positional number system. It is of 4 types. ये 4 types के होते हैं जो हम पढ़ेंगे. First one is your binary number system. Second one your decimal. Third one your octal. And fourth one your hexadecimal. First tell me, what is the base of your binary number system? Yes, tell me, what is the base of it? Base 2 and decimal number system 10. Octal number system 8, hexadecimal number system 16. It is the base of your number system. Now we are going to conversion of these systems. How can we convert it? First, if we want to convert binary to decimal, फर्स्ट कन्वर्जन हम करते हैं बाइनरी से डेसिमल. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस नंबर, हमारे पास ये नंबर है, हमने इसको किस में करना है? डेसिमल में करना है. फर्स्ट हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस वन, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 and 1 multiply by 2. First we have to write like this and start giving power of 2 from this side. 0 1 2 3 and 4. Any digit which is multiplied by 0 is 0 and 2 power 4. 2 power 4 doesn't means that 2 multiply 4. It means 2 multiplied by 4 times. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 2 power 4 means 16 and 16 multiplied by 1, 16, 0 plus 2 power 2 4 plus 0 and 2 power 0 means 1 and 1 multiplied by 1 is equal to 1. Now add these. 16 plus 4 20 and 20 plus 1 21. This one is your conversion of binary to decimal. Okay, this one is your conversion of binary to decimal. Now if you want to convert decimal to binary, then how can you convert? अगर आपको decimal से binary में convert करना है, for example we are going to take a example like 125. ये आपका डेसिमल में गिवन है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज द बेस ऑफ योर बाइनरी. 2. Here you have to divide it by 2. 2 6 are 12, 2 2s are 4 and here you have to write remainder.
remainder is 1. Now again divide by 2, remainder is 0, remainder is 1, 2 7s are 14, remainder is 1, 2 3s are 6, remainder 1, 2 1s are 2, and your remainder is 1. Now you are going to write like this. You have to start from here. 1 1 1. How many ones are here? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, and then 1 0 and 1. This one is a conversion of decimal to binary. 1 2 3 4 5 0 1. This one is the answer which you got after conversion of decimal to binary. I hope it clear that how you are going to convert decimal to binary. One more thing, you have to learn this table also, and this table is given in your book on page number 17. Okay, ये आपको कैसे याद करना है? Hexadecimal it represents 0. In binary you have to write like this, and decimal. But up to 7, you think that these are the same, but after 7, 8 hexadecimal decimal में same लगेगा, but 9 भी आपको सेम लगेगा, और 10 आप कैसे करते हो? हेक्साडेसिमल में यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय सिंबल 8, एंड इन डेसिमल यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. ये टेबल आपकी बुक में गिवन है, ये आपको एज इट इज याद करना है. वन मोर बिट, इट इज ए shortest unit of your computer, and when 8 bits मिलते हैं तो आपका क्या बनता है? 1 byte, and half of a byte means 4 bit, called your nibble. This all about your second chapter. This one is your number system. Be careful, read it, and whenever you are going to attempt your unit test, बेटा क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, देन उनके आंसर्स आपको टाइप करने हैं. थैंक यू.